A very good morning to the distinguished guests and audience present in the seminar hall and also who have joined us online. It gives me immense pleasure to welcome you all on behalf of Maharaja Agrasen University for the expert talk on empowering Viksit Bharat 2047, the synergy of IoT and AI in industrial revolution. विकसित भारत का औपचारिक शुभारंभ एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत की स्वतंत्रता के 100वें वर्ष यानी वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने की संभावना वास्तव में मनोरम है। देश की तीव्र प्रगति को देखते हुए इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को साकार करना संभव नजर आता है। कार्यक्रम की शुरुआत में मैं मंच पर उपस्थित विशिष्ट व्यक्तियों से निवेदन करूंगा कि वह दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती का आवाहन करें। अब मैं ऑनरेबल वाइस चांसलर सर प्रोफेसर डॉक्टर आर.के. गुप्ता तथा प्रोजेक्ट डायरेक्टर एवं चांसलर्स नॉमिनी श्री सुरेश गुप्ता सर से अनुरोध करूंगा कि वे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री रोहित खोसला जी को स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत करें। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि श्री रोहित खोसला जी आज मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे बीच शामिल हुए हैं। Now I would like to invite Professor Dr. Aparna N. Mahajan, Director and President IIC MATE for the welcome address. Ma'am.
Namaskar and a very warm welcome to this fantastic event, which is an opportunity given by Ministry of Education and AICT. Maharaja Agrasen University is extremely honored and privileged for giving us an opportunity by Ministry of Education to host this Amrit Kaal Vimarsh Viksit Bharat 2047. Today's expert, Rohit Khosla ji, Honorable Chancellor Sir Garg ji, Honorable Vice Chancellor Sir Professor R.K. Gupta, Sri Suresh Gupta Sir, Project Director and Chancellor's Nominee, Registrar Dr. Pankaj, Himanshu Sharma, Event Coordinators, all the directors, faculty members, and my dear students. Viksit Bharat 2047 represents Honorable Prime Minister Narendra Modi ji's vision. We are conducting many events. It has been started and initiated in November 2023. The role for Viksit Bharat is mainly to develop students and young minds through industry academia correlation. And we know that this is the era of intelligence and machine learning, including cloud computing. So this is a fantastic opportunity. We have been among the few who are in India, and the series has been started as a development dialogue from 1st February 2024 and it will be ended on 15th of February 2024. We are among third college today we will be hosting and rest of the colleges will put this development dialogue on various but basic domain would remain in artificial intelligence. So I promise on behalf as a director of engineering, because the subject includes in the engineering field, that we will put in the best of the effort for this seminar series with practicalness, with industry and academia collaboration, and give utmost support to our students to develop themselves in young minds. And let us see, because it becomes our moral duty to develop and maintain our students' practicability through this event. Thank you very much, and thank you. Thank you, ma'am, for your welcome address. There is a famous saying that if you love to do something, you always have time to do it. Despite his extremely busy schedule, Honorable Chancellor Sir Dr. Nand Kishore Garg ji is kind enough to send his wishes and blessings through a video message. I request IT team to kindly play the Chancellor Sir. उपस्थित उपस्थित एवं ऑनलाइन कनेक्टेड सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बड़े हर्ष का विषय है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा संकल्पित विकसित भारत 2047 के लिए जो विजन इंडिया 2047 परियोजना का लक्ष्य है कि भारत अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी में अग्रणी देश बनना है। हमारा देश सामाजिक मानव विकास कल्याण के लिए जो मॉडल है वो पूरे विश्व के लिए अनुकरणीय रहेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परमाणु विस्फोट करके जय जवान किसान, जय जवान के साथ जय विज्ञान जवान, और आज के प्रधानमंत्री जी ने अनुसंधान को जोड़कर भारत की प्रगति को और अधिक तेजी से करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन के प्रोफेसर टी.जी. सीतारमन जी और उनकी पूरी टीम मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें ये अवसर प्रदान किया है। मैं सभी साथियों से फिर से कहूँगा कि इस संकल्प को सिद्ध करना हम सबका दायित्व है। आओ सब मिलकर विकसित भारत 2047 को पूरा करने में जुट जाएं। ऑनरेबल चांसलर सर हमेशा से हमारे लिए मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत रहे हैं।
और वही उनके संदेश में भी आज आपने सुना. There is enormous work that needs to be undertaken in a mission mode to make India Viksit Bharat by 2047. Youth, who constitute the largest population group, have a huge role as they will be vanguard to lead India to Viksit Bharat by 2047. May I now take the pleasure of requesting our respected Vice Chancellor, Professor Dr. R.K. Gupta, under whose guidance Maharaja Agrasen University has flourished, to address the gathering. Sir. Good morning, everyone. I welcome our Honorable Chancellor, Dr. Nand Kishore Garg, the keynote speaker, Mr. Rohit Khosla, Director and co-founder of the core system, Director Caddprimer India, Embedded System Division at Netmax Technologies Pvt Ltd, Chancellor's nominee Shri Suresh Gupta ji, Dr. Aparna N. Mahajan, Director, Maharaja Agrasen Institute of Technologies, deans, directors, and of other schools, faculty members, participants, and my dear students. And Viksit Bharat 2047 is major initiative taken by the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, which holds a special place in the realm of higher education, where intellectual curiosity meets rigorous inquiry and where ideas are nurtured to execution. This seminar series is being celebrated throughout the India in collaboration with Ministry of Education and AICTE. MAU is fortunate to be selected among few higher education institutions in India. I feel privileged to inform you the university is committed to spread knowledge and innovation through research and development. This often involves creating new technologies, processes, and products that have potential to benefit society in countless ways. I would like to take a moment to reflect on some of the achievements we have accomplished recently and celebrate the collective efforts that have led us to where we are today. The startup Aquatic Drone and EVRIC solar based electric car was selected and showcased among top startups in India at Pragati Madan, New Delhi. These startups were highly appreciated by Education Minister Shri Dharmendra Pradhanji and Dr. Abhay Jairi, Vice Chairman AICT, on 29 July 23 on the occasion of 3rd NEP anniversary. IIC of the university has been awarded 3.5-star rating and is one of best running IIC in NWRO. The Honorable Chancellor of the University, Dr. Nand Kishore Garg, received Himachal Ratan Award 2022. Maharaja Agrasen University has been conferred Mentor-Mentee program consecutively for 2 years, 21-22 and 23-24 by the Ministry of Education, Government of India. We will mentor 5 other institutions from NWRO region. Maharaja Agrasen School of Law has received the Certificate of Appreciation for Best Legal Aid Clinic in college level by the Himachal Pradesh State Legal Service Authority in November 2023. On behalf of Maharaja Agrasen University, I extend my heartfelt gratitude to the Ministry of Education, Government of India, and AICT, along with the entire Amrit Kaal Vimarsh community for their unwavering dedication and tireless efforts. Together, let us continue to strive for excellence and uphold the noble ideals that define our university. In the last but not the least, I also stand and pay my gratitude to Mr. Rohit Khosla to be the keynote speaker on this occasion, and I also congratulate Dr. Aparna Mahajan and the entire member of our team making day and night efforts to success this live dialogue. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, sir, for your insightful address.
अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे विश्वविद्यालय के प्रोजेक्ट डायरेक्टर एवं चांसलर नॉमिनी श्री सुरेश गुप्ता सर से कि वह अपने संदेश के माध्यम से उपस्थित युवा श्रोताओं को विकसित भारत लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करें। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी, जो कि थोड़ा स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए उन्होंने अपना आशीर्वाद के रूप में अपनी एक क्लिपिंग भेजी हमें आशीर्वाद देने के लिए। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के गुप्ता जी, आज के कीनोट स्पीकर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिनका अपना एक वजूद है, अपना नाम है, कम से कम 4-5 कंपनियों में ये डायरेक्टर, सीईओ, बहुत बढ़िया इनकी कंपनियां चल रही हैं और ये उनको सबको लीड कर रहे हैं। ऐसे रोहित खोसला जी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज यहाँ डिप्यूट किए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको स्पेशली, जो एआईसीटी के चेयरमैन है, उन्होंने लेटर लिख करके महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी में हमको उन्होंने भेजा है कि भाई हम आपको ये आज की स्पेशल टॉक के लिए आज ये इनको रोहित खोसला जी को प्रोवाइड कर रहे हैं। हम उनके आभारी हैं। आज इतना गंदा वेदर अराउंड यूनिवर्सिटी है, अभी भी फॉग है बाहर, जिसके अंदर आने में बड़ी तकलीफ हमारे स्टूडेंट्स को, खासकर स्टूडेंट्स को, मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही आज दिल की गहराइयों से अपने स्टूडेंट्स को मैं धन्यवाद दे रहा हूं। उनको, वो जो आज बड़े टाइम के साथ यहाँ पहुंचे हैं आज इसके अंदर, भाई हमारी फैकल्टीज को, और हमें तो जैसे भी हो हमें तो पहुंचना ही था। अगर स्टूडेंट नहीं आए तो क्या करेंगे हम आकर के यहाँ। मैं स्टूडेंट्स के लिए आज सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को आज धन्यवाद यहाँ यूनिवर्सिटी की तरफ से दे रहा हूँ कि स्टूडेंट्स ऐसे गंदे वेदर कंडीशंस के अंदर इन फुल फ्लेज्ड कैपेसिटी वो आज यहाँ पहुंचे हैं। उनके लिए मैं दिल की गहराइयों से उन सभी को आशीर्वाद, धन्यवाद, सब कुछ दे रहा हूं उनको। और हमारे स्टूडेंट्स इतने बढ़िया स्टूडेंट्स हैं, हमारी फैकल्टी इतनी बढ़िया फैकल्टी है। डे एंड नाइट हमारी फैकल्टी सोचती रहती है कि भाई क्या हम उनको कल को कोई नया क्या चीज सिखाएं। स्टूडेंट्स, अभी महाजन जी ने पीछे मुझे बताया कि इतने स्टूडेंट्स अपने आप आ रहे हैं उनके पास कि हमें भी इसके इनोवेटिव इस सिस्टम के साथ आप कनेक्ट करो, हमें भी जोड़ो। और मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपने स्टूडेंट से भी, अगर आपको किसी दूसरी फील्ड का भी नजर आए कि इसके अंदर स्पार्क है, कोई ये आगे बढ़ सकता है किसी इनोवेटिव आइडियाज के साथ, महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी कोई कमी नहीं आने देगी उस बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए। और हिंदुस्तान में जो हमारे आदरणीय मोदी जी ने जो एक संकल्प लिया है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचाएंगे, और उसी में आज का ये जो विचार विमर्श ये जो किया है, विकसित भारत के लिए जो विचार विमर्श की जो कड़ी के अंदर एक सीरीज उनके मोटिवेशन से एजुकेशन मिनिस्ट्री ने और एआईसीटी के चेयरमैन और उनकी पूरी टीम, मैं आज तक, पहले आपने देखा होगा कि ये कहा करते थे गवर्नमेंट में जाओ कोई काम नहीं होता है, और आज के दिन इतनी मेहनत एआईसीटी की टीम कर रही है, इतनी मेहनत एजुकेशन मिनिस्ट्री के ऑफिसर कर रहे हैं। शाम को 6-6 बजे भी उनके मेल्स आती हैं कि आपको अभी इमीडिएट कल मॉर्निंग में ये प्रोग्राम करना है। पहले आज तक हमने कभी, पिछले हमारा 2013 से हम एआईसीटी के साथ कनेक्टेड है, पहले इस तरह की एक्टिविटी नहीं देखने में आती थी। सिर्फ इंस्पेक्शन के लिए आते थे बस एआईसीटी के लोग।
आज इतने एक्टिव हैं उनके ऑफिसर्स, मैं मेरे पास शब्द नहीं है उनका धन्यवाद करने के लिए। और जो उनके जो ऊपर जो टीम है और उनकी जो पूरी एक नीचे तक की टीम है, बहुत एफर्ट कर रहे हैं कि इस हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनको ग्रूम करके कैसे इनको बढ़िया से बढ़िया साइंटिस्ट, बढ़िया से बढ़िया इंजीनियर किस तरह से बनाया जाए। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये आदरणीय जो मोदी जी की सोच से सब मेल खा रहा है। और जो काम नहीं कर पा रहा है उसको साइड में भी हटना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो कोई भी किसी पोस्ट को लेकर के बैठ जाए और काम ना करे। आउटपुट आउटपुट बेस्ड और टाइम बेस्ड, टाइम बाउंड प्रोग्राम्स हैं। और जो ये जो विकसित भारत विचार विमर्श की जो आज की एक टॉक है आईओटी और एआई के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, आने वाले समय के अंदर एआई और आईओटी ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर और भी बहुत सारी टाइम के साथ साथ अपग्रेड होती रहेगी चीजें। लेकिन ये जिन बच्चों ने सीख लिया उनको फ्यूचर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, उनको बहुत बढ़िया आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। और मैं सभी स्टूडेंट से ये आज उनको सभी को एडवाइस दे रहा हूं, कोई भी बगैर वक्त गवाए इस दौड़ के अंदर शामिल हो। और आप देखना कितना आपका, आपके परिवार का, आपके माता पिता का, महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी का, आपके मोहल्ले का, आपके शहर का और भारत का नाम रोशन करेंगे आप में से कितने कुछ। हम 2047 तक नहीं रहेंगे, लेकिन आप जरूर 2047 तक रहेंगे। आप देखेंगे कि ये आज जो भारत है इसका कोई कंपैरिजन नहीं कर पाएगा, पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई इसके मुकाबले नहीं खड़ा हो पाएगा। जितने भी जो डेवलप्ड कंट्री हैं, इंडिया उन सबको पीछे छोड़ेगा और सिर्फ आप लोगों के दम पर। क्योंकि कोई भी ये डायस पर बैठे हुए ये नहीं कर पाएंगे ये काम आप ही करेंगे और भारत का नाम रोशन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं सभी स्टूडेंट से अगेन ये उनको एडवाइस दे रहा हूं कि खुल करके आगे बढ़ो। पढ़ाई एक वो जो पास मार्क्स हैं वो एक अलग इशू है, लेकिन आपका ब्रेन जितना विकसित होगा, जितना डेवलप होगा, जितना आप उसमें से आप ले सकते हैं, एबीसीडी कोई भी आए आपके सामने उसमें से कुछ ना कुछ आपको जरूर सीखने को मिलेगा। और आज का ये लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है सब जगह, और इसके अंदर आपकी जो जो अभी हमारे रोहित खोसला जी जो आपको यहाँ अपना एक्सपर्ट टॉक देंगे, डिलीवर करेंगे, इसमें से आप बहुत कुछ ग्रैब कर पाओगे और अपने रास्ते चुन पाओगे आगे के लिए। जैसा मैंने पहले कहा है कि हम हमारे टीचर्स के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो हम पीछे नहीं हटते हैं। आज भी इतने खराब वेदर के अंदर आप सब लोग यहाँ आए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आपके संदेश के लिए हृदय से साधुवाद सर। आपके शब्द हमेशा कागर में सागर के समान होते हैं और हमें प्रेरित करते रहते हैं। Next, I now invite the Registrar of the University, Dr. Pankaj Rangalia ji, to share his thought on today's topic. A very good morning to all of you present here. I would like to express my sincere gratitude to our distinguished guest, Mr. Rohit Khosla ji. I would like to extend my best wishes to Honorable Chancellor Dr. Nand Kishore Garg sir, Honorable Vice Chancellor Professor Dr. R.K. Gupta sir, and to our Chancellor nominee Shri Suresh Gupta sir for this program. My greetings to Professor Dr. Aparna and Mahajan, faculty members, my colleagues, and dear students. Today, we have here to celebrate and engage in meaningful dialogue
for Viksit Bharat 2047 seminar series. It is an excellent opportunity for all of us. At last, I want to thank each and every one of you and of your presence and participation in this important event. Thank you once again, and I wish all the best for this success of this event. Thank you. Thank you, sir. Before I request our chief guest, Mr. Rohit Khosla, for the expert talk, I take the opportunity to introduce him to you all. Mr. Khosla is the director and co-founder at the Core Systems, director Caddprimer India, director Embedded Systems Division, Netmax Technologies Pvt Ltd. He is an IoT and embedded system design expert, having expertise in Cadence OrCAD PCB design and developer. Microcontrollers product design, also involved in embedded C product development, embedded Python language app development, analog system design, power system design. His specialities include embedded systems, IoT, robotics, and aero modeling. Sir, kindly enlighten the audience with your plethora of knowledge. Please, sir. Good morning, everyone. Good morning, sir. I'm being privileged to be speaking on IoT, AI, and especially on Viksit Bharat 2047. So you must be aware about what is Viksit Bharat 2047. That means we should be fully developed at a top position by 2047. So to attain it, we should be top in technology. Our industries, our universities, our society should be at the topmost level. So, in this regard, AI and IoT is going to help us. So, the Government of India, the Ministry of Education, AICT is promoting all top technologies so that we can use them in our daily life, in our working culture, to ease ourselves so that we can perform different task industry very easily. Okay, so I'm just going to start my presentation. Not Please wait a few minutes, we're just starting up. So we are celebrating Amrit Kaal. That means we got independence in 1947, and by 2047 we should be Viksit Bharat. That means a developed country. Okay, so by that time, as a keynote speaker, what we are doing now, we will not be into practice by 247. So the responsibility is on your shoulders to be to witness and to work uh, to make India Viksit Bharat by 2047. We might be not be working at that time. So today I will be discussing what is IoT, what is AI, and how it can help our industry, our household, our social life, our cities to become Viksit, that is dwell. Next slide, please.
So first of all, we want to discuss what is IoT. So IoT stand for Internet of Things. With Internet of Things, the benefit is that we can remotely manage our industry. Many companies, even in this region, in North India, Mahindra and Mahindra, Abbott, Cipla, all are shifting to IoT. By IoT, the company can manage its company, its production remotely. Okay, and let us suppose anyone from the company is not present at the suppose. Like I'm here, I'm not present in my office. I'm monitoring my company, so I can monitor my devices, my company, every the process using my mobile phone. So I can see what are the device parameters that are going on. Not even from this place, that is, I think so, I'm not exactly aware about. It's 25 to 40 kilometers from my office, but anywhere from the world. And especially we can remotely collaborate. People from India can collaborate, people from other countries can collaborate, and people from different industry can collaborate to one project. So people can work remotely and monitor their process, the industry. So nowadays people are collaborating to develop. The benefit of this is that the process, the industry become advanced, and the manufacturing system become very fast. The things that can be performed in that was being performed in 3 months, 4 months are done in days. Okay, next slide please. So what is IoT? IoT stand for Internet of Things. You have listened about this concept of smart city, yes or no? Smart industries, smart homes, and so how can you attain smart industry, smart home, and smart cities? Is by the help of IoT. Suppose you are going to catch a bus to Agrasen University from Chandigarh. So now you have to check that the timing is 8 a.m. The bus will be here in Panchkula or Chandigarh at 8 a.m. है. But with the help of IoT, there will be a tracking, bus tracking, GPS track devices fitted in the buses. And already government of Himachal Pradesh and government of India and even Chandigarh administration has developed apps on which you can see the live status of buses. And in future, it will also predict that bus is full or empty, you get seats or not, or you can wait for the next bus. Secondly, you can check which buses are going to your university, which buses are going to different tourist places, which buses are going to different shopping malls, so that you can plan your system. In this way, the crowd, the people, the daily commuter will come easy. It will be easy to travel here anywhere. Second concept is with the industry. Industry processes going on, different manufacturing process. Furnaces are there, temperature controllers are there, production process is there. Okay. So by monitoring systems on IoT, what will happen? The people should not be present at the point. Suppose there is a hazardous environment, and though they are monitoring remotely. Also, in case of thermal plants, nuclear plants, they should not be present at the exact spot where the process is going on. So what they do, they can sit remotely. Even if the plant is somewhere in Rajasthan, you can monitor the whole process from your university campus from a control room. And even you can shut down and turn on the process. Like this is on and this is off. So the any process, any unit, any emergency systems can be triggered remotely. So the name is called IoT, Internet of Things. In Internet of Things, the data is uploaded from sensors to special controllers. They are called micro controllers, and data is sent to internet
via internet to cloud websites. There are two kinds of websites: normal web server websites and cloud websites. Cloud website, the basic benefit of cloud website is that it can handle more load. If suppose there is an industry like Mahindra and Mahindra, you know that, and any other company, even in your nearby areas like Abbott and the Sipla, so they have thousands and lakhs of sensors in each plant. So that data becomes too much. 2 KB of data per sensor, and there are 1 lakh sensors. The data will be in GBs, and that gigabit of data should go to the servers and should be handled within seconds. Within second, 1 GB data per second. That is too much load on the server. So the cloud websites are working, and they can handle such kind of load. And after going to the cloud, the data is again sent back to the engineers, the administrators, the managers, and they can check anywhere. Like I'm here, I can check all the data on my mobile phone app devices. So the industry is linked to the cloud, and cloud is the link to the devices. Security also increases. Suppose it is there, we have camera installed in our plants, so I can even monitor what is happening in my plant when I'm not there. And if there is if there's a condition like there will be a fire or anything like that, we can trigger fire alarms. We can even trigger extinguisher systems remotely without approaching this. Recently, there was a big fire in your area in a perfume plant. So, in such kind of conditions, the people should not will not be able to call fire brigade. Fire brigade takes some time in some remote regions to reach. Such kind of systems can remotely extinguish fires using AI and IoT systems. So IoT stand for Internet of Things. Things means the sensors, the devices, and Internet means they are internet connected to the cloud, and then to the laptops and apps. So the whole term is called Internet of Things. Internet of Things will also provide thousands of jobs. See, we are working in computer science, in electronics, in mechanical systems, in programmers, as a software programmers. So, how many devices are there in the world on which you can work? It's 3 billion devices. All of the mobile phones, all of the laptops, all of the servers, all of the system. With Google, with Facebook, with Microsoft, total number of devices in the world are 3 billion. What is the total population of the world? 7.5 billion, approximately. It might be up or down. Okay. So, so 3 billion devices, 7.5 billion world population. So, with the coming of IoT, the normal laptop, the normal mobile phones are not included in IoT devices. So, what are included in IoT devices? Smart LED light, smart projector, smart TV, smart air conditioning, and it's already available in the market. And smart industry. Every uh, at home we can have 5 sensors, 6 sensors, 3 sensors, but in industry per plant there are lakhs of sensors. So every sensor is one IoT device. So by 2025, it is being calculated by Forbes worldwide that, and other companies also, that total number of IoT devices will be 30 billion, 30 billion. It will be so much bigger that total number of IP for every device to work. हर device को चलने के लिए there is a IP address required. If किसी भी डिवाइस को चलने के लिए इंटरनेट वर्क करने के लिए देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनेट आईपी एड्रेस. You know which IP address system is going on nowadays? IPv4. And what is coming and partially implemented is IPv6. IPv4 addresses are over. They get over in 2012. So now we are running on an old system, that is IPv4,
when IoT is fully flourished, and even new companies like Airtel 5G, Geo 4G and 5G is there. They were not able to use IPv4. They're using IPv6, and IoT will be using IPv6. Why? IPv6 will provide trillions of IP address, trillions, and IPv4 will provide maximum 2 to 4 billion of IP address that are already allocated. If you now go to any internet service provider in India and ask him you want a static IP for your university or any other place, so they say, sir, it is not available. Like Airtel Himachal will say it is over by it was over by 2020. Abhi koi bhi IP address available nahi. So for this whole IoT concept, trillions of IP addresses will be provided by IPv6. So when trillions of IP addresses is provided for IPv6, India, government of India, especially our Prime Minister Narendra Modi ji has a new concept called Digital India. And in Digital India helps us a lot during the Corona pandemic. You have already seen. If Digital India was not there, our we will be not be able to fight the Corona, because when we started this fight with Corona, the vaccination process happened through a app. You know that, and the app was called Arogya Setu app. That app was the most used app in the world. And I don't know, there was no technology present in the world. The world is not appreciating that thing. दुनिया इस चीज को appreciate नहीं कर रही. But as a software developer, as an app developer, we know for any company like Google, like Facebook, like Facebook is now Meta, Apple, it was difficult to manage so many population that the total vaccine served was more than 2.5 billion. We are 1.3 billion, but per person vaccine was not one vaccine per person, 2 or 3 vaccines. And sometimes the process is happened in our software, but it failed physically. So they repeated the process. The medical staff repeated it. So we managed perfectly this big service, and we were able to vaccinate all. The biggest vaccination process ever happened on this planet by any department, and we were successful in that. That was all due to this Digital India process. Because if we have not done in 2018 the Digital India process, we have not promoted Geo and not promoted Airtel and not promoted other companies to become 4G and then 5G and so much low cost data that in India. People come to us from scientists from different part of country, businessmen, company owners, and they say, internet is so fast and so low cost in India. Anybody, the poorest to the richest, everybody has free internet. Free internet. You can use internet as very low cost. It is not possible to the world, by the world, to provide such a low cost internet to anywhere in the world. In Africa, it's very costly. In Europe, it is very costly. This is also one of the suggestions. If we can provide low cost internet to each and every part of India, so in every aspect, in social political systems, in industrial revolutions, in implementing this kind of technology, that is IoT and AI that I am speaking of, it was impossible to do that. And even to provide medical services to whole of India, so such a big population. India is very big, very big. All of the countries that were saying that India will be very poor, it has very big population, but this large population of IT experts, of different people with good internet has given us edge now over other countries. Okay, so the IoT is Internet of Things, and Internet of Things will provide
millions of jobs in future. Why? Because previously there were only 4 billion devices in the world, but with IoT 30 billion more devices will be added to your ecosystem, that is to industry, to smart cars, smart TVs. Nowadays if somebody has lost his car or forget to lock his car, abhi kya hota hai, we went to high court for some task, and one of the person has smart car, EV car, he forgot to lock his car. And with the IoT app, every smart car, Tata smart cars and every other cars are now with IoT. So he checked his phone. Oh, my car is open. So he clicked on the app. The car got locked. We were 2 kilometers approximately from the car. So the app checked the car. The car is connected nowadays via 4G to the company cloud, and the phone app is also connected to the cloud, so he can remotely check. And if in any case, if, not in normal cars, but it will be available in normal cars also, but in high-end cars you can't steal the car nowadays. Suppose you take a car, okay, and you've opened it, it will not start. Or even if you have managed to manually jump start the car and take it out, the person can shut down the car and he can lock the car remotely. So nowadays if the you want to steal a EV car, it's not possible. It is also due to IoT. The second major thing in industrial evolution that is required and is going on is AI. With IoT, we can monitor remotely the different aspect of industry and our homes, our society, our cameras, our cars, everything. But but AI has given another edge. It can monitor, it can perform tasks by itself without even my presence. So suppose I have deployed AI also with IoT, what will happen? AI will monitor the place. Like AI is currently monitoring my office also. So there are 15 cameras. The cameras are IoT connected. They are showing on my phone also, and they are also being monitored by AI. So if there is some kind of more movement in special rooms that I programmed that should not be visited by any of my office employees or any of the programmer or any external person, it will alert me and lock down that place. So AI can have human factor and can replace human factor to monitor for security purpose and even perform tasks. So AI is also evolving. Next slide, please. So the IoT revolution, I've already updated you. IoT is controlling different industries, your homes. Nowadays, people are also preferring smart homes. With smart homes, you can monitor. You people are here. Your home might be locked. You can monitor your LPG gas, any kind of gas exposures, any kind of fire alarms, security, any if there is an intruder, you can check it from here, and you can also inform your colleagues, your neighbors that please check my home. I think some kind of fishy is going on with my door. Okay, so this can be monitored with smart homes, and with this IoT revolution, with this AI revolution, it has become very low cost nowadays. You can monitor your home, you can monitor your cars at a cost price of 10,000 Indian rupees only. Not a big deal. Okay, next slide please. So smart homes, I already told you, you have smart home application, IoT. This new application due to IoT, that is smart home, smart city, and smart industry, will also empower our youth to get different kind of jobs. We have a very large number of engineering graduates, software graduates, biggest in the world, even larger than China. In education line, India has the biggest numbers of engineers in the worldwide.
Even in other countries, if you go to Australia, if you go to Europe, if you go to Canada, all their IT people are from India, like Agrasen University. Ayush the Freak is a pass out student from your university, is working in Canada in a software company uh, called 3M. 3M is a film company in India, but there in Canada it is big software company. Ayush is working, and many others have their own startup in Delhi. Have passed out from Agrasen University, 2017 batch, I think so. That is from mechanical department. So people are working with different aspects, and number of jobs that the people are getting after your bachelor degree will increase by 10 times due to these technologies. So विकसित भारत में सिर्फ भारत विकसित नहीं होगा, लोग विकसित होंगे, engineers, students will get विकसित, and आप लोगों के विकसित होने से ही देश विकसित होगा. देश लैंड नहीं है, देश आप लोग हो, और आप लोग विकसित होंगे तो ही देश विकसित होगा. So that is the point. And with the application of AI and IoT, the things become very easy. I will take a case of AI. That AI is now helping us to code. Suppose we have a situation like there is a project from a big industry in Maubaddi. I can't say the name online because we have a contract with them, like TVS, not TVS. So they are making EVs. So EV, and they are testing it with EVs. In EVs, the DC current from batteries that is driving the car goes up to 300 amperes. 300 amperes, it's too much current. So we are testing everything. So when we manually test the system, the results, the parameter for testing was not proper. So the testing department, and it's the government testing department, and the private industry, and Tata, and Ford, and other companies, Tata Telco and other companies, are now asking us to develop a IoT system so that the readings, the parameters should be automated, and AI should test it, and we can test 500 different parts at the rate of 1000 samples per day. If we are not able to test, we will not be able to make that parts here in Baddi and anywhere else. So we are testing it with IoT. Secondly, the next advantage with this IoT AI testing is we are not testing. Previously, some worker was sitting, pushing a button, testing the device, noting down the parameters, and testing it for 1 minute, then calculating that these are the readings for 1 minute. So this is the final power transferred to the EV in 1 minute. So it is safe. Now what we are using? We are using Python programming. We're putting sensors. We're using IoT. So the IoT process and AI, the Python program automatically initiate the test. The test is done. Readings are noted down in a Excel format. You know that Microsoft Excel format. That Excel, the math formula that was we applying to get the average of the current, average of the power, average of the heating, what is done in that relay section or in the power cables, is automatically calculated. We are not doing that, and the result is shown. And it is also saying in English, this device is safe. This device is safe. So test is done, and a QR code is generated by the AI. QR code, you know the QR code, na? So the QR code is generated by AI, and there is a sticker printout automatic from the machine, and the sticker is pasted on the part and shipped, packed. So no person is involved. The device is automatically corrected. Testing is done, and if the device fails, it rejected device, and if the device is okay, it says it's okay, and I've tested it. And the second thing we have found that if we manually test that device, there's a risk of the person getting hurt. Sometimes the device, the relay, the parts, electrical part explode because the current level is very high. I don't know that you have
take a precision, you have seen 300 amperes of current? No, I don't know. So it requires a big wire of the size of this size to conduct the current at 24 volts of battery. Very large cable required. So it's hazardous also. And secondly, if manually a person is performing the task using a paper and a pen, and the AI is doing, the AI results are far better and accurate because human error is not there. This test is done by humans, but not exactly on a paper, but on a software by click of a button. So AI is helping in this thing. So smart home, next slide, please, sir. So industrial IoT. So industrial IoT is increasing its presence in the market. पहले क्या होता था, जो इंडस्ट्री है वो मैनुअल मैन्युफैक्चरिंग करती थी, ठीक है. फिर सारी इंडस्ट्री को आपके रीजन में भी ऑल ओवर इंडिया इस तरह का एस्पेक्ट आया कि कोरोना आ गया था. सो जो हमारी लेबर है, जो हमारे वर्कर्स हैं, वो प्रॉब्लम में आ गए. लॉकडाउन था, दे हैव टू गो होम. एंड इंडस्ट्री को, और कुछ लोग इंटरनेशनल इंजीनियर्स भी थे फॉर मेंटेनिंग इंडस्ट्री ऑल अराउंड यू. आपके आसपास जितनी इंडस्ट्री है इसमें कुछ सपोर्ट जैसे जापानीज कंपनी भी देती है, जैसे योकोगावा, सीमेंस, एलन ब्रैडली, डेल्टा, many companies and Indian companies also, Tata, Honeywell, and हम लोग भी. So सब लोग इंडस्ट्री में, बद्दी में यहाँ पे नहीं पहुंच पा रहे थे. So what happened? How much loss industry suffer? Millions of dollars, millions नहीं, billions of dollars का loss. So after that सबसे ज्यादा इंडिया में जो ग्रोथ कर रहा है वो आपका इंडस्ट्रियल एरिया का है. सब लोग ऑटोमेट हो रहे हैं. That is with a device called PLC, Programmable Logic Controller. And उससे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो बेटर हुई है. आपने एक चीज चेक की होगी कि आफ्टर कोरोना 2021, 2022, 2023 में types of product in the market are becoming low cost and type of variety that more tech part, जैसे स्मार्ट टीवी की परसेंटेज कितनी बढ़ गई है मार्केट में. स्मार्ट कार्स के मॉडल्स, उनकी सिस्टम्स, उनकी अवेलेबिलिटी, जो उनका अवेलेबिलिटी टाइम पीरियड होता है वो बहुत कम हो गया. इंस्टेड ऑफ कब आपको कार अवेलेबल होगी 6 मंथ्स बाद, अब 1 मंथ और 2 मंथ्स का वेटिंग पीरियड होता है. दिस इज ऑल ड्यू टू इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स. सो अगर हमें विकसित भारत करना है तो हमें इंडस्ट्रियल IoT को भी डिप्लॉय करना पड़ेगा. मींस हम एक मैनुअल मैन्युफैक्चरिंग से इंडस्ट्रियल IoT में शिफ्ट होना चाहिए. उसमें क्या होगा, हमारी जो सिस्टम है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ऑटोमेटेड हो. जैसे मैंने अभी टेस्ट के बारे में बताया, टेस्ट अपने आप सॉफ्टवेयर कर रहा है, जो इंजीनियर है वो उसको मॉनिटर कर रहा है. और जितना एक इंजीनियर मॉनिटर कर रहा है उसको टेस्ट को, तो अगर वो पहले 50, 60, 70 डिवाइसेस को टेस्ट करता था, now he is testing 5,000 devices per day. तो लेवल कितना हाई हो गया. एंड सेकेंडली द फाइनल जो क्वालिटी डिपार्टमेंट है, that has informed that now the quality of the product has improved so much. जो एरर वाली डिवाइसेस हैं वो प्रोसेस में नहीं आ रही. एंड जो भी एक्यूरेसी डिफाइन की गई है कि दिस डिवाइस कैन हैंडल 320 amperes of current, it is handling 320 amperes of current, and the tests are accurate. And number of jobs, पहले इस समय अगर 3 people या 4 people मैनुअल टेस्टिंग कर रहे थे, जो इंजीनियर्स नहीं भी थे, नाउ वी रिक्वायर 10 people. ऐसा लगता है हमें कि एआई, और ऐसा मिथ है वर्ल्ड में कि एआई और आईओटी आने से जॉब्स कम हो जाएंगे, क्योंकि विकसित भारत अगर करना है जॉब्स ही बढ़ानी होगी, जॉब कम नहीं कर सकते हम. आप लोगों के विकसित होने पे ही देश विकसित होगा. फैक्ट्री अकेले के विकसित होने से देश विकसित नहीं होगा. That's the point. So the number of deployed people in automated system is 10 manual people, 4 engineers, 3
software engineers also, and 2 AI engineers. So from 3 people that are producing 20 devices per day, now the devices increased to 5,000. And that the employment, 10 manual workers and 5 electrical engineers, 2 software engineers, and 2 AI engineers. So the number of the employment is increased, the process is becoming more smooth, the production level is increased. That will cause the GDP to rise, the production rate to rise. We can manufacture more and more devices, and we can have more efficient systems. Next slide, please. So the industrial manufacturing, I've already told you that it is being automated by PLCs, IoT and AI. These devices, अगर ये devices PLC और IoT नहीं होंगी, तो AI इनको control ही नहीं कर पाएगा. AI can't control a person. AI can control a machine, a software, a digital device. So such kind of robotic manufacturers are also controlled by AI. But इनके पीछे जो नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड है, वो जैसे गेस किया गया था वर्ल्ड वाइड कि अगर 10 पीपल काम कर रहे हैं तो फ्यूचर में एक ही चाहिए होगा, ऐसा नहीं है. अगर हमारे पास रोबोटिक आर्म हम किसी इंडस्ट्री में डिप्लॉय करते हैं, तो वहां पे एक आर्म डिप्लॉय नहीं होती, उस इंडस्ट्री की प्रोडक्शन रेट बढ़ जाता है. एक की बजाय कितना हो जाता है? 10 की अगर वो नेक्स्ट कहता है 20 कहता नहीं, अब मैं आई विल बाय न्यू plant in Baddi, and I can have one more plant, 20 robotics line here and 20 here, and उसके बाद भी मैं I will be expanding to new thing in 2025. ऐसे लोग कह रहे हैं. Everybody is doing that. And when you deploy such kind of robotic systems, they require maintenance, they require programming, they require monitoring. 3 things: maintenance, monitoring, कोई उसके पीछे उसको मॉनिटर करके रखेगा ना, और उसकी प्रोग्रामिंग, एंड उसके पीछे एआई भी. एआई के साथ क्लाउड होगा. एक एआई की सॉफ्टवेयर कंपनी होगी जो कहीं वर्ल्ड में कहीं और होगी, इंडिया में कहीं और होगी, जैसे बॉम्बे या हैदराबाद या, एंड दैट इज आल्सो बीइंग एम्प्लॉयड. सो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज देयर आल्सो. सो एवरीबॉडी इज ग्रोइंग ड्यू टू दिस आईटी रेवोल्यूशन, एंड रोबोटिक्स आर the total number of production system is also increasing. हम लोग वर्ल्ड वाइड ही एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की तरफ जा रहे हैं, और जितने लोग पहले होते थे उनकी जो बाइंग कैपेसिटी थी वो अब बहुत बढ़ चुकी. अब आप ही देखो, हर घर में कार है, सबके पास मोबाइल फोन्स है ना, और इतनी सबकी फूड रिक्वायरमेंट्स है, और आजकल लोगों की फूड रिक्वायरमेंट्स भी ज्यादा है ना, और वैरायटी भी मांगते हैं. स्कूल्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, स्कूल्स में भी स्मार्ट स्कूल्स चाहिए. तो इतनी सारी जो रिक्वायरमेंट है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने इसको सर्व करना है, और वो सर्व करने के लिए हमें क्या चाहिए? स्मार्ट सिस्टम, स्मार्ट इंडस्ट्रीज, स्मार्ट आईओटी सिस्टम, स्मार्ट एआई सिस्टम्स, और उस सब से नंबर ऑफ जॉब्स इंक्रीज हो रही हैं. इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, आवर प्रोडक्शन रेट इज ग्रोइंग, आवर एक्सपोर्ट इज ग्रोइंग. India has amazing, nobody is talking about this thing. World, जब इंडिया अच्छा करता है तो उस चीज को लोग वर्ल्ड दूसरी कंट्रीज दबा देते हैं. Indian exports are in 2023 have gone far above 600 billion, and जो लोग हमारे इंजीनियर्स दूसरी कंट्रीज में जॉब कर रहे हैं, जो इंडिया से बाहर भी जॉब कर रहे हैं, that have collected $120 billion in 2023. So जो हमने दूसरों से अर्न किया और जो हमने प्रोडक्ट सेल किए वर्ल्ड वाइड, that was 600 billion. बट जो रियल इनकम हुई कंट्री को, that is 800+ billion. That is far above than other country. So हमारा जो गोल है कि एज ए कंट्री जो इनकम अर्न करती है, जितनी कंट्री इनकम अर्न करेगी उतने ही हम लोग रिच होंगे. हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं और इंडिया से बाहर क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उसी से इंडिया प्रॉस्परस होगा, उसी से इंडिया विकसित होगा. दैट इज लिंक्ड टू द मैन्युफैक्चरिंग स्पीड. द मैन्युफैक्चरिंग स्पीड इज लिंक्ड टू द मोर
technology would deploy in this industry. Next slide, please. So challenge in manufacturing. The challenges are production should be optimized. Downtime. आप downtime समझते हैं? What is downtime? Different industry जो है, they work 24 hours. लोग जाते हैं ऑफिस, they come home. कुछ लोग और आते हैं, वो शिफ्ट में काम करते हैं, they work at night. Then they go home. In morning the shift same. In your local area also, every industry has 3 shifts. 3 shifts, 8 hours, 3 shifts. Sometimes some industries following 6 hours of shift. So, but the industry is not halting even for 1 second. The machines are going on producing things 24 hours, 365 days. So they require, the industry की requirement है हमारा downtime कितना हो, कहते सर the downtime should be 2 minutes per month. कितना downtime maximum expect करते हैं? 2 to 5 minutes per month. And the process of AI and IoT is constantly monitoring every wear and tear. हर machine में wear and tear होता है, ठीक है? तो that is being monitored. The graphs have been plotted. If there is, अगर कहीं पे vibration increase हो जाएगी, it is called predictive analysis. Predict कर देते हैं पहले कि this bearing is going to go off, this pipe is going to burst because it is overheated for the last 24 hours. So shut it for 1 minute and replace it, then turn it on. So downtime कितना आया? 1 minute. Instead of जब वो burst ही हो जाता pipe, तो replace करने में 1 day लग जाता, 2 day लग जाता. Yes or no? Okay. So downtime is great. So IoT enabled technology जो है वो time monitoring, उसका predictive analysis, उसकी prediction की ये कब खराब हो सकता है, उससे पहले उसको रिप्लेस करो. सभी इंडस्ट्री ऐसे कर रही है. इस जो नया सिस्टम है इसका नाम इंडस्ट्री 4.0 आ गया. इसका स्पेशली जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स है उनको बहुत बेनिफिट होगा. पहले हम ये चीज लर्न कर रहे थे यूनिवर्सिटी में कि हाउ वी मैन्युफैक्चर. नाउ हाउ वी मैन्युफैक्चर में इंजीनियर्स डिप्लॉय हो ही रहे हैं, हाउ वी कोड में इंजीनियर्स डिप्लॉय हो ही रहे हैं, बट हाउ टू मॉनिटर, हाउ टू इंप्रूव विद एआई, इसमें द नंबर ऑफ हमें जो इंजीनियरिंग फोर्स चाहिए होगी वो मोर एंड मोर है. इंडिया वो भी कर रहा है, जैसे हमने चंद्रयान 3 को लैंड किया, पूरी दुनिया देखती रहेगी. यू नो वेयर दैट चिप, द सीपीयू, द प्रोसेसर, जैसे आपके लैपटॉप में इंटेल i5 है, इंटेल i7 है ना, तो उसमें कौन से वाला इंटेल का सीपीयू यूज हुआ? एनीबॉडी, एनी आइडिया? चंद्रयान 3 में इंटेल का सीपीयू नहीं यूज हुआ. दैट सीपीयू इज मैन्युफैक्चर्ड इन चंडीगढ़ and by SCL Mohali, Semiconductor Complex Limited Mohali, and it is designed by engineers जो आपके साथ ही, आपके आसपास ही रहते हैं, ठीक है? तो that CPU was so efficient, and उसमें भी वो CPU was designed optimum for AI, क्योंकि हम यहाँ से 15 मिनट्स के गैप में जो भी हम उसे कमांड देते लैंड करने की, सपोज हम ड्रोन को कंट्रोल कर रहे हैं, इट वाज लाइक अ ड्रोन, वी कांट गिव कमांड फ्रॉम हियर. सपोज हमने इसको कहा कि यू गेट स्ट्रेट and start descending, it cannot be done because every command will reach 15 minutes late the rover. So उसे खुद ही करना था, हमें पाना था कि मैंने ये अच्छी तरह कर लिया. So that CPU power is very efficient, and who was controlling that system was AI. उस AI को भी डेवलप किया गया बहुत सारी गवर्नमेंट एंड बहुत सारी प्राइवेट इंडस्ट्री ने, और वन ऑफ द बिग गवर्नमेंट प्लांट जो इंडिया का एक टॉप मोस्ट प्लांट है, Semiconductor Complex Limited, that is located in Mohali in our region, has developed that chip, and the chip was so efficient you perfectly with few centimeters of error, less than 1 centimeter error, वो proper लैंड किया. अभी जापान ने लैंड किया है कुछ दिन पहले, तो उनका जो रोवर है वो टम्बल हो गया, अब वो उसको करेक्ट कर रहे हैं, बट रशिया वाला तो गिर गया था, सबको पता ही है, लेकिन हमारा बहुत एफिशिएंट है. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता लगा कि टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करके, प्रमोशन करके, सबको एनहांस करके, इस काफी सारे लोगों को पता ही नहीं है व्हाट इज आईओटी,
व्हाट इज एआई। अगर किसी को पता होगा कि आईओटी क्या है, एआई क्या है, तभी वो उसको डिप्लॉय कर पाएंगे। अगर आपको पता ही नहीं, आप उसमें काम नहीं कर रहे, तो आप किसी इंडस्ट्री में डिप्लॉय कैसे कर पाएंगे। तो ये एक अवेयरनेस कैंपेन है। गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड कि अगर हम सबको अवेयर करेंगे, अगर हम सबको बताएंगे, देन दे विल स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दैट थिंग इन योर प्रोजेक्ट्स, in your technology, in your internships, in your whatever industrial interaction you have for any kind of industry, वहां पे जाकर आप deploy करेंगे। Previously you will be doing thing by simple software, now you will try to design thing with AI। अभी भी ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ मेरे असिस्टेंट्स ऐसे हैं। So हम लोग एक चीज, there is a technology called Modbus। Modbus is a protocol, two wire hardware and software protocol, serial protocol, by which sensor is informing system to the main computer industry। So I was coding that, and we getting problems in coding, and the speed was not optimized. We're getting a speed of 9600 bits per second, and we required a speed of 1 mbps, that is 10 into 10 to the power 6 bits per second. So we're not able to take. So the junior engineer, what he did, he asked AI to change the code, look for error, because it was 40 page of code, 40 page to 100 lines of code. We were not able to find a trace. The AI within second was able to find the error. And secondly, he recommended, the AI recommended us, please add this paragraph to your code, and your code will be more efficient with 0% error, and it will work. So we deployed AI and we deployed the code, and without effort, without our personal coding effort, the thing was improved. It's working 10 times better, and it might have taken us 5-6 days to troubleshoot it, लेकिन वो कितनी देर में ठीक हो गया, 1 minute में। So this is how AI is helping to even code and program and change the code। नॉट ये नहीं कि सिर्फ एआई मॉनिटर करता है, जो भी आप प्रोग्राम लिखोगे, जो आप सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे, जो आप हार्डवेयर डेवलप करोगे, उसमें भी एआई आपको चेंजेस रिकमेंड करते हैं। So there are a lot of systems that is helping. This new system with IoT AI is called Industry 4.0। इसका एक नाम मिला है, Industry 4.0। Worldwide other countries are saying Industry 4.0 को अभी सोच रही हैं, लेकिन इंडिया का विजन इतना अच्छा है, इतना फास्ट है कि हम लोग अदर कंट्री से पहले कर रहे हैं। अब इसे इंडस्ट्री में कुछ हमारे इंडियंस जो मेरे साथ लिंक्ड है, दे आर वर्किंग इन जर्मनी वी थिंक इज फार एडवांस्ड इन सिस्टम, बट एंड ऐसे ही पीएलसी ऑटोमेशन में कुछ लोग काम कर रहे हैं, दैट इज इन यूएस, कैलिफोर्निया वाली उनकी वेस्ट कोस्ट साइड। बट आई हैव सीन दैट सम ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट आर बीइंग डिप्लॉयड हियर इन बद्दी is a better version of same company's hardware and software that are deploying in Germany। So वो भी मुझे बहुत अच्छा मिलता है। इस तरह के गवर्नमेंट के एफर्ट से, जैसे हम एआई को, आईओटी को सभी पब्लिक में प्रमोट कर रहे हैं, उनसे लोग अपने प्रोडक्ट्स में भी, अपने सिस्टम्स में भी इस चीज को डिप्लॉय करना बढ़ रहे हैं, और कई एस्पेक्ट्स में हम दूसरी कंट्री से बेटर भी परफॉर्म कर रहे हैं, जो पहले ऐसा नहीं होता था। वो बहुत अब इसका डिफरेंस आया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंसर कनेक्टेड डिवाइसेस है, वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग को इजी कर रही है। अगर हमें विकसित भारत बनना है तो हमें ये चीज करनी ही पड़ेगी। अगर हम उसको एक डिफरेंट वे से, एक एआई डिप्लॉय करेंगे, तो व्हाट विल हैपन, हम बेटर कर पाएंगे, हम फास्ट कर पाएंगे, और हम जो हमें ऐसा नहीं कहा कि जब आप चाहो तब ग्रो कर जाओ। हमें गवर्नमेंट ने एक दी है कि आपको इस डेट तक, जो हम पिछले 100 ईयर्स से कर रहे हैं, हम 12 मोड में पहुंचे, हमें उनसे आगे पहुंचना है ना। ऐसा भी होगा, अगर हम भी ग्रो कर रहे हैं तो पूरा वर्ल्ड भी तो ग्रो कर रहा है। तो अगर हम उनके लेवल के, उनके करंट लेवल तक पहुंचेंगे, तो दिस माइट हैपन, दे विल बी ऑन द नेक्स्ट लेवल। सो हाउ कैन वी रीच एट द सेम लेवल? बाय ग्रोइंग फास्टर ओनली, बाय गवर्नमेंट, हम सब लोग एवरी ईयर अपनी जीडीपी, अपने ग्रोथ रेट, अपनी इंडस्ट्री, अपनी जॉब्स, अपने हाउ मेनी, अग्रसेन यूनिवर्सिटी को भी इस चीज का रोल मिला हुआ है। गवर्नमेंट हैज डिप्लॉयड यू पीपल
the big university in Delhi also, Delhi NCR area also, and here also. Why here? So that you can make more engineers that is required, more developers that are required. So इसमें आप लोग भी एक रोल कर रहे हैं, that is in Viksit Bharat. That is how, by providing the manpower. काफी सारी countries, even France PM was here, the president was here. He was saying, I will be calling 30,000 uh, software developers and IT professionals to France. Why he is saying? Because they don't have. Because they don't have, we have. By 2047, according to my thinking, most of the software companies, ये 2047 में नहीं, अभी ही हो रहा है. Every mobile phone, every laptop, every software is being developed by Indians. And हम इस चीज को इस तरह से मेंटेन कर सकते हैं कि जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, AI, IoT, इन सबको पहले ही अडॉप्ट कर ले, ताकि हम इस चीज को इतना आगे लेके जा सके. क्योंकि अगर हम फ्यूचर के आगे चलेंगे, हम नई टेक्नोलॉजीज को डिप्लॉय करेंगे, तो ही हम सबसे डिफरेंट काम कर सकते हैं, हम अपना ग्रोथ रेट अदर कंट्री से बेटर कर सकते हैं. और वर्ल्ड इस चीज को अप्रिशिएट भी कर रहा है कि इंडिया इज डूइंग अमेजिंग. आई डोंट नो हाउ यू पीपल आर डूइंग इन 5G बहुत एट फ्री कॉस्ट डिप्लॉय हो गया वर्ल्ड वाइड, पूरे इंडिया में. बाकी कंट्रीज में डिप्लॉय हो रहा है, कुछ कंट्रीज में हमसे पहले हो गया. लेकिन जिस रेट पे, जिस लेवल पे हम बहुत ज्यादा लोग हैं, हमारे पास सबके पास 5G फोन्स है, जितनी number of people are using 5G is far greater than any country. And वैसे ही the government has initiated that IoT, AI, Industry 4, ये भी जितनी अवेयरनेस होगी उतना ही आप लोग उसे इजीली हर जगह डिप्लॉय कर लोगे फास्ट ट्रैक पे, और आपको भी अच्छा लगेगा. Why? By doing conventional type of things, जो old methods है, अगर आप उसको एक new method से करेंगे, what will happen? आपका इंटरेस्ट पड़ेगा. अब एक होता है कि हमें कोड करना है, सपोज करो हमें पाइथन में IoT का कोड करना है. पहले क्या होता था, 2014 में हम लिखते थे, कोड लिखो, ऐसे किया, डिवाइस लगाई, डिवाइस वहां पड़ी, मैं लाइव हूं इसलिए नहीं दिखा सकता, तो द डिवाइस को हम कोड करते थे. नाउ वी से AI write a code with efficient coding and fast system, deploy these sensor DHT11, pressure sensor BMP240, and deploy DS18B20 and these 5 sensors, and write a code. Done. Copy, paste it. So the thing is that university might be saying that ये तो बहुत ही बुरी बात है, हम कॉपी कर रहे हैं, जो इट्स लाइक चीटिंग है ना. सो इन्फोसिस एंड TCS में कुछ चंडीगढ़ के लोग हैं जो HR मैनेजर हैं, बीटेक फ्रॉम यहाँ पे लोकल यूनिवर्सिटी से, देन MBA इन HR in Mysore with Infosys. They say, sir, there's a big problem now. Send हमें कुछ ऐसे इंजीनियर प्रोवाइड कीजिए जो सॉफ्टवेयर में गुड हो, एंड जनरेटिव AI को यूज करके उनके कोड को प्रोजेक्ट में डिप्लॉय करके, और या प्रोजेक्ट के कोड को AI में पेस्ट करके उसमें चेंजेस करवा के वापस पेस्ट करके चलाने में एफिशिएंट हो. इन US, if you can copy paste code from a generative AI tool and use it with AI to make an AI application for IT matter, जैसे एप्लीकेशन जैसे शेयर मार्केट प्रेडिक्शन होता है. शेयर मार्केट में क्या होता है कि वी कैन हैव अ शेयर लाइक, लेट अस से टेक एग्जांपल MRF टायर्स. MRF टायर्स का 90 में उसका शेयर था 2000 रुपीज. नाउ इट इज एट 1.25 lakh per share. So we can download the data from 2000 or 90 up to 2023, and we can predict in February 15 MRF की शेयर की प्राइस ये हो. उससे क्या होगा, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में उनको प्रेडिक्टिव AI बेस्ड आंसर मिल जाएगा. अब इसको पूरा बनाने का मेथड क्या है, सारी कोडिंग करो. फर्स्ट डाउनलोड इट फ्रॉम Yahoo Finance or any BSE stock exchange system, then do math,
probability, and then deploy it. But with AI, you can simply tell the AI, I can't say the name of AI which you can use. There are a lot of tools, you know that. And you can say then, write a code to predict future on 14th of February. The share name is Microsoft, Apple, and MRF Tire India, and take data from the last 5 years. To predict, so with the error of 2 plus minus 2%, the result will be active. And ये सारा कोड तो इंजीनियर्स ने बनाया नहीं है, ये तो कॉपी पेस्ट किया from AI and use it in your project, and the project will be done. ऐसे ही जैसे सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट को भी प्रोजेक्ट कहते हैं, है ना? Who are from software department, computer science or electronics or electrical? Raise your hand, please. Okay, others are from? You're from? You sitting in front? Computer science. So people, computer science को प्रोजेक्ट्स डेवलप करने के लिए कहा जाता है, सिनॉप्सिस करने के लिए आता है. तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, सारा एआई से करके उसको आप प्रेजेंट करेंगे with your code. The code will be very much analytical. Teachers like analytical systems as graphs. So graphs के साथ आप शेयर मैट का पूरा प्रोजेक्ट within few minutes AI के साथ डेवलप करके कर सकते हैं. And what is happening? Indian companies, US companies, and other countries to be your companies, they are paying far more salary for engineers that can copy paste the code from AI rather than directly programming them. For directly programming, the good programmers are getting 45 lakhs Indian rupees to 60 lakh rupees per annum in US. And if you are a generative AI tool coder that you can code also and you can copy paste from AI also and design the project, you have efficiency of that, then the package is 3 CR per year. So it's 10 times, 9 to 10 times compared to a normal programmer. So that is also efficient. The government also want that people should be very good in AI, very good in programming, and by using AI help, you can code less and get more. Okay. Next slide, please. So IoT in healthcare. I'm diabetic. Last year मुझे diabetes से diagnose हुआ. So my school juniors and few friend circle, they have a new startup in Amritsar here in India, and with in collaboration with a software company in California. So they're developing a system by which they're deploying smartwatch. You know, smartwatch. So it is constantly monitoring my sugar levels, my BP, and oxygen levels, and stress levels, and many things more. 18 parameters it monitoring, and that is being uploaded to their app, to my phone, and then uploaded to the cloud. And doctors and others are working on it and recommending आपने क्या खाना है, क्या आपने मेडिसिन ली, वो सब कुछ उसको पता लग रहा है. एंड दे आर प्रोमिसिंग मी दैट इन 1 year my diabetes will be reversed. डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी, मुझे टैबलेट भी नहीं खानी पड़ेगी, और ये रिवर्सल है. बिकॉज आई एम नॉट सो मच ओल्डर, आई एम 42 नाउ, so started at 41. So within 2 years they are trying to reverse thing by using this IoT smart devices. एक ये है, and then there is a scale आप इस पे वेट मेजर करते हैं. 18 उसमें 18 सेंसर है, ग्लूकोमीटर है, अदर मशीन्स हैं, और ग्लूकोमीटर भी अब नहीं रिक्वायर्ड है, ये पैच है. तो पैच इज मॉनिटरिंग एवरीथिंग, कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग. तो ये 7 days में एक बार चार्ज होता है, एंड 7 days तक every minute it is monitoring and plotting the graph. So IoT is also helping in healthcare. So इससे जो हमारी जो प्रॉब्लम्स है, जो ये भी बहुत इंप्रूव होगी. और इसमें सिर्फ डॉक्टर्स डिप्लॉय नहीं होंगे. पहले क्या होता था, अगर आपको डायबिटीज है, आपको बीपी है, तो कौन डिप्लॉय होंगे? डॉक्टर्स. अब डॉक्टर्स ऐसे कह रहे हैं कि माय नेम इज रोहित, तो कहते हैं रोहित यू हैव डिप्लॉयड ओनली 2 people. मैंने कहा सर 2 ही डॉक्टर चाहिए, 2 doctors and 1 nutrition, that is also a type of doctor, dietitian, and
And how many engineers? Team of 75 in one place and team of 150 with another company, and कुछ और हम नहीं इसमें deployment करेंगे. So 200 engineers are being deployed in this medical application. So this is called smart healthcare. इसमें भी as a engineers, if you are working software development, this is also a new field where you can work from a conventional coding level. Okay. Next slide, please. So IoT, what happens? Sensors are used. Sensors are connected to networks and devices. Can I show you here a device? Okay. So this is an IoT device. Okay. The sensor use a platform called Raspberry Pi, and it can upload the data to the internet using a LAN cable. Okay, and then it goes to the cloud, and the devices will be sending data to the everywhere. And इसमें ऐसा भी होता है, suppose करो कोई इंडस्ट्री में मशीन है या हॉस्पिटल मशीन है, how many people can at one time check the reading? Any guess? 2, 4, 5 जो मशीन के सामने स्टैंड है. और अगर डिवाइस IoT हो एनीबॉडी. इसमें जो क्लाउड डिप्लॉयड है वो इसीलिए भी डिप्लॉयड है. द नंबर ऑफ पीपल who can monitor a reading in a medical device or in a factory or any place need not to be present at the same place where the sensor is deployed. He can be anywhere worldwide, and thousands, अब 1000 लोग भी चीज को देख सकते हैं. And secondly, suppose an industry is deployed a sensor that is going online. The software can plot a graph. The person can see the machine that the reading now is suppose 15 degrees centigrade, but he can also check that 4 years back in February, on 5th of February at 11:30, the reading was 6 degrees centigrade at same conditions, everything. So you can compare the system. Otherwise, you have to check the records. So this system has everything. So with sensors, you can connect to networks, and networks you can analyze things, that is analytics, and then the user interface. That I was saying that everybody can check is from phone. Nowadays, many of the engineers want work from home. और कई बार ऐसी कंडीशन भी आ जाती है, जैसे कोरोना आया तो हमें मजबूरी में वर्क फ्रॉम होम करना ही पड़ा. तो अभी तो ऐसा है कि सभी इंजीनियर्स का मोड ही वर्क फ्रॉम होम हो गया. अगर मैं किसी को डिप्लॉय करता हूं, उन्हें मैं कहता हूं कि देयर इज अ प्रोजेक्ट एंड यू हैव टू गो टू जम्मू एंड कश्मीर, और वहां पे इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट करना है. सो द पर्सन सेइंग सर वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता. J&K के घर वाले कह रहे हैं कि थोड़ा टफ होगा. कहाँ पे है, टेरेन टफ होगा, सिक्योरिटी इशू हो सकता है. और दैट इंडस्ट्री हैज that is on the Kashmir highway is saying, sir, we don't have accommodation for every engineer. We require 35 engineers, deploy 2 here and the remaining people 30 from home. How? Because we have IoT network set up. So more and more users can work on same project. उससे क्या होता है, काम डिवाइड हो जाता है, काम फास्ट हो जाता है, and troubleshoot. Next slide please. So this is system. PLC और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जो है वो डेटा किसको देगी, नेटवर्क को. That means internet, and data will go to the cloud, and from the cloud it will come to application, a software application on your phone, on your laptop, and in between cloud पे ही हम AI डिप्लॉय करते हैं. तो AI आने से क्या होता है कि जो यूजर है उसको भी सिर्फ काम नहीं करना पड़ता. The AI automatically tune the parameter. Next slide please. स्मार्ट फैक्ट्रीज, इससे क्या होगा, स्मार्ट फैक्ट्री जो गवर्नमेंट ने इसीलिए कहा है कि IoT और AI. आपको लग रहा होगा कि व्हाई द गवर्नमेंट इज और AI सिट इज इनिशिएटिंग AI और IoT इन विकसित भारत. विकसित भारत में हमें ज्यादा फैक्ट्रीज लगानी चाहिए. वी रिक्वायर मोर रोड्स, वी रिक्वायर मोर इंजीनियर्स, वी रिक्वायर मोर प्रोडक्ट टू सेल. बट इससे IoT और AI से देश विकसित कैसे होगा? बिकॉज नॉर्मल फैक्ट्रीज बढ़ाने से जो लॉस में चले जाए, जिनकी प्रोडक्शन रेट परफेक्ट ना हो,
जिनको घाटा बढ़ जाए, तो उनसे देश विकसित नहीं होगा। विकसित तब होगा जबकि फैक्ट्रीज क्या हो, स्मार्ट हो। सबसे ज्यादा अर्निंग किसी कंट्री को हो सकती है, दैट इज बाय एक्सपोर्ट्स। मोदी जी क्या करते हैं, हर कंट्री में, आपको नहीं बताते, उन्होंने अपनी जॉब परफेक्ट की है, हर कंट्री में जाते हैं, जाके सबसे डील करते हैं। अगर कोई आता है, उनको कहते हैं यूपीआई से प्लीज हैव ए सिस्टम, हम आपकी कंट्री भी ग्रो करेंगे और हम भी ग्रो करेंगे। आप बताइए हम क्या सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं, आप क्या सॉफ्टवेयर हमें दे सकते हैं। हमारा डिफेंस सिस्टम, हमारे सिस्टम सब कुछ आईओटी है, और भी आईओटी डिफेंस में डिप्लॉय हो रही है, वो भी हम कर रहे हैं। वी वर्किंग विद डिफरेंट आर्मी एंड एयरफोर्स यूनिट्स, वो भी मैं बता नहीं सकता, बट काफी कुछ कर रहे हैं। उससे काफी कुछ रिमोट मॉनिटरिंग हो रही है। एक पर्सन को मैं ये भी नहीं कह सकता किस पोस्ट पे, तो जहां पे भी वो डिप्लॉयड है, उनको वहां बैठना नहीं पड़ता। दे कैन सिट इन योर न्यू वेरी गुड डेवलप्ड कार्स, महिंद्रा डिफेंस की तरफ से स्पेशल एसयूवीज नहीं आई हैं, उनमें बैठते हैं, लैपटॉप से बैठे, दे कैन सी द सिस्टम एंड दे कैन टारगेट एनी टेररिस्ट up to 10 kilometer firing range with automatic weapons. Nobody is there. So if the person हमारी एलओसी के हमारे पर्सन को आगे वो आके अटैक करता था, अब वहां तो सिर्फ टावर है, टावर को अटैक से करेगा, टावर पे तो गोली भी चलाएगा, तो लोहे की टावर है, कुछ नहीं होगा, और इतनी देर में टावर उसे क्या करेगा, शॉट डाउन कर सकता है। तो ये बहुत कुछ हो रहा है, इसीलिए हम काफी सारे रीजन में जो टेररिस्ट एक्टिविटी है उसको जीरो कर सके। क्योंकि पहले आप ह्यूमन डिप्लॉय करते थे, फिर वहां भी कैजुअलिटी हो जाती थी, अब वो ऑलमोस्ट इंडिया हैज ट्राइड विद टेक्नोलॉजी, हम उसको जीरो ही कर चुके हैं पर ईयर, जीरो कर चुके हैं पर ईयर, इतनी अच्छी कैपेसिटी। और आपने देखा होगा कि इतने फास्ट रेट पे हमने उनको वाइप आउट ही कर दिया है। और एक और बात है, वो भी मैं बता नहीं सकता, हम उधर भी मॉनिटर कर रहे हैं हर जगह, तो यूजिंग दिस टेक्नोलॉजीज, whole of our western borders are being monitored. उनकी नहीं कैपेबिलिटी नहीं है, हमारी बहुत ज्यादा है। सो स्मार्ट फैक्ट्री से क्या होता है, हम स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, हमारा सिस्टम डिप्लॉय हो गया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो दिस इज ए कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ अ जर्नी, जिसमें हम आईओटी से डिवाइस, मैंने आपको बता भी दिया कि सेंसर्स इस तरह की डिवाइसेस पे लगते हैं एंड डेटा गोज टू क्लाउड, एंड वहां पे बहुत सारे यूजर्स जो आपके लोकल कैंपस में हैं, या वो किसी और सिटी में है, या वो किसी और कंपनी में, सब लोग मॉनिटर कर सकते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मॉनिटर कर सकते हैं। ऐसे हिमाचल गवर्नमेंट भी मॉनिटर कर रही है। सोलन के रीजन में और राजगढ़ एक जगह है, मैं गया नहीं, वहां पे भी डिप्लॉय किया है। तो यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट को मैनेज किया। यहाँ पे पानी तो बहुत ज्यादा है हिमाचल में, पर पीने की पानी की कमी है, अंडरग्राउंड वाटर इज वेरी डिफिकल्ट टू, सो गवर्नमेंट आईओटी और एआई को यूज कर रही है टू प्रेडिक्ट कहाँ कहाँ पानी है, और वहां से वाटर सप्लाई डिफरेंट गांवों से। कई लोगों को काफी दूर जाना पड़ता था, अब उनको पाइप्स मिल गए हैं उनके अपने लोकल में। एक स्पेशल मिनिस्ट्री है जिसे वाटर मैनेजमेंट मिनिस्ट्री कहते हैं, और वो हर जगह पानी करवा रहे हैं, ऑल विद द हेल्प ऑफ IoT and remote sensing and AI. मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ, these are the different technologies जहाँ पे हम AI करते हैं, and you can contact me, मैं अपनी डिटेल्स सबको देके चाहूँगा, आप कभी मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो आई विल बी सेंडिंग यू ऑल ऑफ दिस डेटा, दिस पीपीटी, द कोड्स एंड हाउ टू डू इट वाया व्हाट्सएप। और जो एप्स है मेरे पास, ये नॉर्मली पेड होते हैं, बट हमने तो फ्री में इसको ओपन सोर्स में डेवलप किया, गिटहब पे है, एंड आई विल बी सेंडिंग यू दैट आल्सो इधर, ताकि आप इसको अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने सिस्टम में डिप्लॉय कर सकते हो। आप अपने डिपार्टमेंट से, है ना, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से, मैकेनिकल डिपार्टमेंट से, मुझे पर्सनली सब लोग जानते हैं, आप मुझसे करें, और यूनिवर्सिटी को मैं मेल कर दूंगा विद ऑल माय डिटेल्स, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। For any kind of questions, you can go for now. Sir will tell you that how to go for questions. Thank you very much. Thank you.
Many thanks, sir, for such insightful and enlightening address on a relevant topic of today's time, that is IoT and AI. I'm sure after such knowledge-filled and thought-provoking address, you all must be better equipped with the nitty-gritty and possibilities of IoT and AI in industrial evolution. It's time to take few questions from the audience, which our expert would be more than happy to answer. I request Ajay sir to kindly coordinate with the students and faculty members in case they have. Kunal sir, I think. Dr. Kunal. Ajay. So thank you, Khosla, very much for this wonderful session. I have a question that as a faculty member, how we can contribute towards the mission of Viksit Bharat 2047? Yes, yes. That is also my concern that how these universities can help it. That see, we have a semester system, we know that. In our time, I'm 2002 pass out from BTech itself. At that time also, the semester system is same. I think nowadays it's also same. You have 8 semesters. For each and every semesters, you can allocate projects. Normally, we deploy only one project in a system. Like I have to check with Vimarsh. In 2018, we built a satellite for NASA. 2017, sorry for that. And 2017, from Agrasen University, we built a satellite and we participated in it, and our rank was 25. In worldwide, right? Agrasen was 25. So 10 people from Agrasen University, I don't remember this team, 7 were from mechanical, other were from other trades also. So they participated in that and we built a proper satellite with software and we present that project to NASA in America. So that was a good application. So my recommendation that every semester, teachers can allocate projects with IoT, with AI, or any other 3D printing, and you can formatting, and you can help students to complete that project. And if they got a problem, you can link me also. I can send details, and you can design that. That should be done. Teachers, and secondly, teachers and students will form a club. Robotics Club of Agrasen University, AI clubs of Agrasen University, and Hackathon Club of Agrasen University. Then they will represent your university to each and every competition that is held by Government of India, by AICT, by other universities like Punjab, Technical University, Punjab, and you will be the students will be getting good awards like. For example, 4 lakh rupees, 5 lakh rupees, and then you can enhance your knowledge by participating in such kind of project. इस तरह के projects बना के इस तरह की अब common study के parallel में काम करके एक तो आपको learn होगा, but when you go for interview after your for placements after your college बहुत easy हो जाता है क्योंकि आपने चीजों पे काम किया होता है. That is quite different from what other people from other university are not doing. ये मेरी रिकमेंडेशन है. हर फैकल्टीज 2 to 3 फैकल्टीज पर डिपार्टमेंट एक तरह का क्लब स्टार्ट कर लो. एआई क्लब, आईओटी क्लब, रोबोटिक्स क्लब एंड हैकाथॉन क्लब. हैकाथॉन में आप स्टूडेंट्स को कहिए कि हर जगह जाके हैकाथॉन से पार्टिसिपेट करें और वहां पे टॉप करें. हिमाचल में बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते हैं.
चंडीगढ़ और यहाँ पे भी ऑर्गेनाइजर है, अदर यूनिवर्सिटीज को भी यहाँ बुलाइए कि अग्रसेन यूनिवर्सिटी इज conducting such kind of drone competition. Other universities and other colleges come here and join. बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत 10 times का आपकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बढ़ जाएगा और एक्सपर्ट्स को बुला सकते हैं। मैं हूँ क्या किसी और को हो गया not experts. In continuation with this question, I would like to suggest some tools or software for the student as a beginner to start with the IoT and AI based systems. देखिए जो भी IoT के बहुत सारे टूल्स हैं। I will be mailing the tools. Himanshu sir will coordinate me, and we can have email ID of all of you, and or we can have WhatsApp group. हम सारे टूल्स शेयर करेंगे। वैसे one of the tool you can note it down that is ये जो को सैटरडे दिखाया जो फोन पे चल रहा है, it's normally for industrial IoT it's very costly. It cost for students it will be costly $150 per month. And minimum you can buy for 1 year. But there are free tools also. Sir, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि पता ही नहीं है कि टूल्स कौन से हैं। The one is Adafruit IO. People can note it down. Adafruit IO. And second is UBI dots. And with आप लोग एक सॉफ्टवेयर यूज करते होंगे MATLAB. MATLAB सभी डिपार्टमेंट यूज करते हैं। उन्होंने भी एक फ्री टूल दिया है for IoT. MATLAB को बहुत अच्छा है कि हाँ एक इंडस्ट्री कांट वर्क विदाउट IoT। और अगर एनालिटिक्स सिस्टम्स डिप्लॉय कर रहे हैं इंडस्ट्री में, जो MATLAB चाहती है कि उनके ग्राफ्स आप लैपटॉप पे प्रोसेस करो फॉर एनी गिवन एप्लीकेशन, तो उसको आजकल ट्रेंड IoT का है तो लोग ऑनलाइन ही देखेंगे, नॉट ओनली MATLAB सॉफ्टवेयर। तो उनका सॉफ्टवेयर का नाम है थिंग्सपी। इट्स फ्री और ये तीनों टूल फ्री है। 5 सेंसर्स 5 डिवाइसेस पर अकाउंट। और अगर किसी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन है कि सर अगर मेरे प्रोजेक्ट में मैंने अपने घर को ऑटोमेट करना है, आई रिक्वायर 2 रूम्स, मैंने भी करना है, मेरे मॉम को भी करके देना है, 2 लोगों को हमें फ्री में IoT चाहिए, you want to deploy 10 sensors 5 per room, you can have multiple accounts. Suppose आपका नाम दिव्या है तो divya@gmail.com। दूसरा क्या होता है divya.shivla@gmail.com। you can form 2 accounts and you get 5 sensors per account। इस तरह के टूल्स बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे पेड टूल्स हैं, बहुत सारे फ्री टूल्स हैं। मैं सबकी लिस्ट 18 to 20 पर टेक्नोलॉजी तो मैं आपको शेयर कर दूंगा और वो हिमाचल के वो शेयर कर देंगे, वो आपको मिला देगा। और जो IoT का आप नोट कर सकते हैं वो है Adafruit IO। एक फ्री ऐप भी है तो मैं सबसे अपना WhatsApp नंबर देके आपको सेंड भी कर सकता हूँ। मेरा WhatsApp नंबर नोट कीजिए प्लीज, 7888 77 6924 7888 77 6924। अब मुझे व्हाट्सएप कीजिए कि मेरा नाम आपको पता शायद नहीं पता, रोहित खोसला इज माय नेम एंड यू कैन मैसेज मी कि आई एम स्टूडेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, प्लीज सेंड मी सॉफ्टवेयर एंड ऐप मैं आपको सेंड करता हूँ। नॉर्मली इट्स अ पेड ऐप लेकिन हमने उसको फ्री लेवल पे बनाया है, वो आप यूज करेंगे, उसपे आप अपने फोन से अपना पूरा घर ऑटोमेट कर सकते हैं। कैसे करना है तो स्टेप्स जो है रिकॉर्डिंग के और डिवाइस के डिप्लॉय करनी है, आई विल बी सेंडिंग। Can you spend some module of the Python? Like we are in our syllabus having pandas and NumPy. So more modules from the Python, like to discuss Python programming language. हाँ उसमें pandas तो यूज तो नहीं होता है एंड उसमें कीरास है वो यूज होता है, NumPy यूज होता है फॉर मैथ वर्क एंड उसमें हम एक और स्पेशल टूल यूज करते हैं फॉर कैमरा ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। जैसे चंडीगढ़ में आप जाते हैं तो आपने देखा होगा कि ऑटोमेटिक चालान हो रहे हैं ना, ये सिस्टम हमारे ही कंसर्न कंपनी से डेवलप किया है, उसका नाम है आर इलेक्ट्रॉनिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल पंचकुला। और इसमें हमने रास्पबेरी पाई वो जो हार्डवेयर पड़ा है वैसा ही डिप्लॉय किया है एंड कैमरा के अंदर ही लगा हुआ है और जो सॉफ्टवेयर लिखा है वो भी हमने कोड नहीं किया, सब कुछ फ्री में मिल गया, दैट इज टेंसरफ्लो। TensorFlow is a library by Google that can detect object, जैसे कौन कितनी स्पीड पे आ रहा है, कैमरा अच्छे हैं, 64 मेगापिक्सल कैमरा है,
1 किलोमीटर रेडियस तक देख सकते हैं सेंसस भी। हाँ फाइन, अगर आप मैं वो भी लिंक आपको सेंड कर दूंगा, हाउ टू डिप्लॉय पाइथन, ओपनसीवी एंड टेंसरफ्लो फॉर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन with this. You can also search also Google how to deploy TensorFlow, OpenCV and Python using Raspberry Pi for object detection. सर जैसे हरियाणा में फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है, इधर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है जहाँ पूरी कंपटीशन होती है स्टूडेंट की, जो अभी ये विकसित भारत के लिए अपीयर ब्रांच वाइज देयर, उनके 3 राउंड्स होते हैं, वहाँ स्मार्ट हैकेथॉन से पहले की बात है, वहाँ स्टूडेंट को 3 प्राइजेस दिए जाते हैं हरियाणा में पर साल, हर ईयर होता है ये हरियाणा इंडस्ट्री घर के साइड में, कि जहाँ हम बड़े स्टूडेंट का ग्रुप करके भेज सकते हैं। होता है यहाँ पे there is a department called CIA, Confederation of Indian Industry, उनका ऑफिस सेक्टर 31 में 31 में ट्रिब्यून चौक पे है, और उनका मैं नंबर आपको डिप्लॉय कर दूंगा, या हिमांशु से तो मैं डिप्लॉय कर दूंगा। They are going for such a product, और यहाँ पे जो हैकाथॉन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया AICTE करेक्ट कर रही है, एंड वो डिफरेंट कैंपसेस में होती है। जैसे इस बार आपको कहा है, देन CGC को कहा जाता है, CU को कहा जाता है, चित्कार को कहा जाता है, सबको मिलकर कहा जाता है बारी-बारी, तो आप वहां से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ऑलरेडी आप उनको कह सकते हैं AICTE को, मैं उनको कह दूंगा कि आपसे कांटेक्ट कर ले, वो कहेंगे आप अपने कैंपस में करवा लो, इंडस्ट्री में आ जाएगी, और आप दूसरे कॉलेज की यूनिवर्सिटी को आपको कैंपस बहुत बड़ा है, आप कर सकते हैं आराम से। Students, any questions, please? Good afternoon, sir. I am Nishta Gautam, second year student of BTech CSE, and my question is how we can, as a student, can contribute for Viksit Bharat. You can contribute to Viksit Bharat is by deploying this technology, by making projects. आप projects design कर सकते हैं with AI and IoT, and उसको आप परमिशंस लेके you can आपकी जितनी भी आसपास की इंडस्ट्री है, ये सब लोग बहुत प्रॉब्लम्स में, हम लोग इन्हें कांटेक्ट नहीं करते, तो अगर हम इन सबको कांटेक्ट करें कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बद्दी में ही है इंडस्ट्रीज, ये लोग तो हमारे पास आते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम्स है, ये सॉल्व कर दो, वो सॉल्व कर दो, और अगर आप लोगों ने तो प्रपोजल नहीं दिया, लेकिन अगर आप प्रपोजल देंगे तो ये रोज ही आपके पास आ जाएंगे, हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, तो आप उन प्रॉब्लम को सॉल्व, पहले तो आप अपने लेवल पे, अपने हॉस्टल लेवल पे या अपने होम लेवल पे जहां भी आप हैं, इस IoT की एप्लीकेशन खुद बना सकते हैं, फिर उस एप्लीकेशन के बेस पे यू कैन कॉन्टेक्ट ऑल ऑफ द इंडस्ट्रीज, आपके जो प्लेसमेंट सेल है, आपका एक ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल होगा, उनके साथ इंडस्ट्री लिंक्ड होती है, तो दे कैन सेंड डेटा टू देम, एंड वो जो आपके कॉलेज के डिपार्टमेंट है, आप प्रोजेक्ट्स उठा सकते हैं। इसमें आपको एक डिपार्टमेंट भी मिल जाएगा, वो मैं आपको बता दूं, इसमें DIC, डिजाइन एंड इनोवेशन सेंटर, ये पंजाब यूनिवर्सिटी में डिप्लॉयड है, ठीक है, CSIO में, आप प्लीज बैठ जाइए प्लीज, ये हर जगह डिप्लॉयड है, और दे विल पे यू आल्सो। few students of 2020 pass out, 2021 pass out, 2019 pass out have worked with DIC Chandigarh, DIC Design and Innovation, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर एक डिपार्टमेंट है, AICTE इसका विंग है, CSIO सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च इसका विंग है, तो वो लोग आपको पे करेंगे, इंडस्ट्री वाले प्रोजेक्ट उन डिपार्टमेंट्स को देंगे, CI को देंगे और DIC को देंगे, DIC कैन फॉरवर्ड टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, एंड वो फिर आपके जो प्रोफेसर होंगे, जो आपके HODs होंगे, उनकी गाइडेंस के अंदर आप उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। आपके डिपार्टमेंट को 5 लाख, 10 लाख, 30 लाख, मेरे कुछ नोन स्कूल कॉलेज स्टूडेंट है UIT चंडीगढ़ से, they have earned a startup amount of 50 lakh rupees by government of India, और कोई वापस नहीं करना अमाउंट, वो मिल गया उनको, कहा है कि अगर आप इनकम अर्न करोगे तो वापस कर देना, नहीं अर्न करोगे तो कोई बात नहीं। कैसे उन लोगों ने पहले कुछ देर तो काम किया, अब वो डिफरेंट कंपनीज में जॉब पे चले गए, तो स्टार्टअप अभी जो नेक्स्ट बैच है उनका, जो सेकंड ईयर UIT, वो कर रहा है, दैट इज ऑन IoT सर।
और यहाँ कुछ बदली के लिए पहले आप सेकंड ईयर में हैं और पहले कुछ एप्लीकेशन बना लीजिए और लेटर ऑन यू कैन इन थर्ड ईयर फोर्थ ईयर यू कैन मेक ए ग्रुप एंड यू कैन वर्क आउट। और अगर मेरी सपोर्ट चाहिए तो मैं नंबर दे दिया, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते Thank you, sir. हैं। थैंक यू। Good morning, sir. I'm Shagun Srivastava from BTech CSC first sem, second sem. Sir, I would like to ask one question. What is the roadmap of Viksit Bharat as a student perspective? That is same thing. रोडमैप ये है कि आप अभी IoT और AI application develop करें in college itself. You are in a BTech college, you can work on it, and later on you can contact industry for their problem solving. Solve the problem, you will get paid also. Your department gets paid also from I already told you design innovation. And later on आप जब आप इंडस्ट्री में पहुंचेंगे जॉब के लिए तो आप एक बेटर इंजीनियर हैं। आप AI को भी डिप्लॉय कर सकते हैं, आप IoT को भी डिप्लॉय कर सकते हैं। इंडस्ट्री जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, HR डिपार्टमेंट इन्फोसिस कॉन्टेक्ट मी दैट उनको जनरेटिव AI टूल की एक्सपर्ट है। फिर सर हमने ना 450 engineers from Punjab, 200 plus from Himachal Pradesh and 500 from Haryana states. We have hired in 2023 June as software developer in Infosys. So previously क्या होता था, हम इनको Java में ट्रेन करते थे, इंडस्ट्रीज को दोबारा ट्रेन करती है, कॉलेज से जो ट्रेनिंग लेके आए उसके बाद फिर दोबारा से इन पाइथन और .NET और उनको डिप्लॉय करते थे। ठीक है, यही करोगे आप? कहते नहीं, अभी क्या हो रहा है, our the production department, the software production department that has asked for what कि ये generative AI tool में expert होना चाहिए। तो अगर आप अभी सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर में generative AI, Python से development, AI और IoT में एप्लीकेशन डेवलप करोगे तो जब आप पास आउट होगे तो आप जो इंडस्ट्री को इंजीनियर प्रोवाइड करोगे एज योरसेल्फ, वो एक AI डेवलपर होगा, वो विकसित भारत में प्रॉपर हेल्प कर सकता है। क्योंकि इस वर्कशॉप का इनिशिएटिव ही ये है, इसका पर्पस ही ये है कि हमें विकसित भारत के लिए नॉर्मल इंजीनियर्स नहीं चाहिए, हमें स्मार्ट इंजीनियर चाहिए जो IoT, AI और मशीन लर्निंग इस सबके साथ सॉफ्टवेयर कर सकते और हार्डवेयर पे डिप्लॉय कर सकते। थैंक यू। सर, good morning, sir. My name is Agrasen from first year CSC. So my question is कि how should Viksit Bharat look in 2047 if we specifically talk about education? See, the thing is that we at that time scenario क्या होगा मैं अभी predict नहीं कर सकता because जो इतनी fast pace पे new technologies आ रही है, जैसे 2018 में the new revolution was 3D printing and 2017-16 में it was drones अब कॉमन हो चुके हैं। अब 2022-23 में क्या है, AI है और आगे आगे न्यू टेक्नोलॉजीज और भी आ सकती है। आपको भी करना पड़ेगा जो अभी टेक्नोलॉजीज आ चुकी है लाइक AI, IoT, ड्रोन डेवलपमेंट, देन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ पावर प्रोडक्शंस विद पावर मॉनिटरिंग। आपको इस तरह के फील्ड्स में काम करना पड़ेगा अपने बीटेक सिलेबस के साथ साथ पैरेलल। जैसे हम स्कूल्स में भी ऐसा करते हैं, स्कूल का सिलेबस चल रहा है, आई एम फ्रॉम ICSE सिस्टम, तो स्कूल का सिलेबस चल रहा है लेकिन हम साथ में हमारे टीचर्स हमें टेक्निकल साइंटिफिक जैसे रोबोट्स वगैरह डिजाइन करने को कहते हैं इन स्कूल्स। इन इंजीनियरिंग कॉलेज वी आर वर्किंग ऑन एम्बेडेड सिस्टम्स बट सिलेबस वाज विद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लेटर ऑन आजकल क्या हो रहा है, नॉर्मल व्हाट वी आर वर्किंग विद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड हार्डवेयर डेवलपमेंट बट साथ में क्या काम कर रहे हैं, IoT एंड AI। तो सिमिलरली आपको IoT और AI या मशीन लर्निंग या डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स इसमें काम करते रहना पड़ेगा। और 2047 का मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, मुझे लगता है तब तक तो ये बातें बहुत पुरानी हो जाएगी और पता नहीं क्या क्या आ जाएगा। मुझे जो गैस लग रहा है कि 2047 में हम काम करेंगे ही नहीं, हम ना कंप्यूटर को कहेंगे मुझे ना प्रोजेक्ट बनाना है। वैसे मैं तो अभी भी ऐसे करता हूँ कि मुझे प्रोजेक्ट बनाना है शेयर मार्केट का, जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि मुझे प्रेडिक्ट करो 14 फरवरी को MRF का शेयर कितना होगा। उसने बना के चल भी पड़ा, खुद बनाया, स्लगिश चल रहा है, एरर आ रहा है, जो AI ने बनाया वो बन गया। उसके बाद नेक्स्ट डे आइडिया आया मेक इट GUI इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस करो और वहां पे 4 शेयर को एंटर करने की स्पेस हो।
बना दिया उसने। फिर आगे मैं और भी कुछ सोच रहा हूँ कि अब तू अपने आप ना रोज मॉर्निंग में मुझे मैसेज कर देगा कौन कौन से शेयर किस किस दिन क्या हो रहे हैं, आप प्रेडिक्शन देता है, तो पैसे लगाते रहो और एक्स्ट्रा मजे के लिए एक्सपेरिमेंट के लिए। तो ये तो 2047 का मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, पर मुझे जो गैस लग रहा है आजकल के फ्यूचर में हम नहीं करेंगे ना, तो हम कंपनी में जॉब करने नहीं जाएंगे, हम एआई करेंगे भाई अटेंडेंस लगा, फिर तो अग्रसेन यूनिवर्सिटी जा, वहां पे जाके एआई को और उसका सेमिनार लगाया, वहां पे कोई आपको वर्चुअल इमेज दिखेगी, वो रोहित खोसला का सेमिनार लगा के चली जाएगी और आपको प्रैक्टिस करा देगी, और मुझे इन्फॉर्म कर देना अगर किसी क्वेश्चन हुए, तो अगर क्वेश्चन खुद सॉल्व करना, जैसे आपका नाम क्या है, तानिश, तानिश का क्वेश्चन खुद भी एआई सॉल्व करेगी, जो उसका क्वेश्चन था 247 था, तो वो सॉल्व करेगी, अगर नहीं आए तो उसे कहना 2 मिनट्स और मुझे मैसेज करना, फिर मैं आंसर दूंगा, फिर उसको आंसर देना। तो मुझे लगता है फ्यूचर में काम ऐसे होने वाला है, सैलरी लेकिन हमें मिलेगी। Thank you, sir. Thank you for responding to the queries and guiding the audience. ये स्टूडेंट्स को जो मैंने अभी माइक के ऊपर पहले बोला था कि जैसे मोदी जी ने तो टारगेट रखा ना विकसित भारत 47, ये आई एम श्योर 100% ये 35 के आसपास भारत दुनिया से आगे निकल जाएगा, और निकलेगा सब आप लोगों जो ये फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट भी जो आज की डेट में इतना फास्ट दौड़ रहे हैं ना, ये कभी नहीं हुआ आज तक, कभी नहीं हुआ। और अब की बार महाजन जी ने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, वो चाहे बीबीए के हो चाहे बीसीए के हो, सब जगह से दूसरे डिपार्टमेंट के भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं कि हमें भी इन्वॉल्व करो, और ये अपने आप में विकसित भारत की तरफ हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये टारगेट 47 जरूर है, आप सब लोगों को अपने आप में अपडेट रहना है। ये नहीं है कि आज आपने एआई पे कर लिया, कल उसमें रोबोटिक्स पे कर लिया। अभी अभी जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जमाना चल रहा है, ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल नेक्स्ट 6 महीने में ये और अपस्पीड हो जाएगी चीजें। आप जितना फास्ट अपने आप को आगे करोगे उसी का बेनिफिट रहने वाला है, और सभी के सभी अपडेट करते रहे। पुराने को फेंकना नहीं है, वो काम वो भी आएंगी सारी चीजें, लेकिन नई नई चीजों पे आप आगे बढ़ते चलोगे तो विकसित भारत ये 35 में ही हो जाएगा। उसके बाद तो दुनिया हमसे ही आएगी पूछने के लिए, भाई हमें जैसे आज तक कभी ऐसे कोई वक्ता नहीं आए जिन्होंने ऐसी टॉक डिलीवर की हो कि रोहित जी ने तो अपने आप को ऑफर दे दी कि आप मेरे को फोन पे बात करो, मेरे से पूछो आपको जो दिक्कत आ रही हो, तो इससे बढ़िया कोई आदमी होगा नहीं। मैंने पहले ही कहा था कि हिंदुस्तान में रिनॉन्ड है, ये पूरे हिंदुस्तान में रिनॉन्ड है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको भेजा है। तो क्यों भेजा है? ये लालची होते ना तो ये हर चीजों को छुपा छुपा के रखते, इन्होंने कोई भी चीज छुपाई नहीं है। सिर्फ जो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें इनके नॉलेज में है उन चीजों को ये डिस्क्लोज नहीं कर सकते, और वो करने भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सारी चीजें डिस्क्लोज करनी तो हमारी सीक्रेसी आउट हो जाएगी। तो इसलिए आप सब लोग अपडेट करते रहे, महाजन जी से कांटेक्ट करें, हमारे और जितने फैकल्टी के लोग इसमें जुड़े हुए हैं उनसे करते चले, और आप ही में से अपने विक्रम सारा भाई और इस टाइप के आप आगे निकलोगे, ये मुझे विश्वास है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir. Friends, in the last, I would like to say this is a good opportunity which is given by Mr. Rohit Khosla for the students. It is for you. He has given the offer. Now it is on your side how to go ahead and how to cash it and how to proceed further. So with all this words, again I am very thankful. और भी जो लोग और भी जो स्टूडेंट्स हो किसी भी डिपार्टमेंट के हो, जो भी कुछ इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं, वो सब के सब को आप महाजन जी के पास ले आओ, वो अपने आप को करेंगे।
General care free tools are available. Try to implement it as an experiment at your personal level. Then you can go ahead for industrial levels. Thank you. I now invite Mr. Himanshu Sharma, an ISP coordinator of Maharaja Agrasen University, to present vote of thanks. Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of Maharaja Agrasen University, I stand here with huge gratitude to express our sincere thanks to all who have made this empowering Viksit Bharat 2047 event a big success. I extend my heartfelt thanks to AICT, Minister of Education, Government of India, for trusting Maharaja Agrasen University with the honor of hosting this dialogue. Our deep appreciation goes to Mr. Rohit Khosla for sharing his wealth of knowledge with us today. I would like to express our gratitude to our eminent dignitaries, Honorable Chancellor Nand Kishore Garg Honorable Vice Chancellor Professor Dr. R.K. Gupta ji, Chancellor's nominee and Project Director Shri Suresh Gupta ji, Registrar Dr. Pankaj Nanglia, Director Mate Professor Dr. Aparna N. Mahajar. Your presence has added immense value to this dialogue. I would also like to acknowledge the efforts of Dr. Vinay Chamoli and the dedicated members of the organizing committee who have worked hard to ensure seamless success of this event. Last but not the least, a sincere thanks to you all the participants, the directors, deans of various schools, students, and our online viewers. Your active participation has made this dialogue encouraging and meaningful. As we conclude this event, let us carry forward the spirit of collaboration and knowledge sharing that has been fostered here today. Thank you once again for being a part of this significant dialogue, and we look forward to more inspiring engagements in future. Thank you. Have a wonderful day. Thank you, sir. यूनान मिश्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, बरसों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। एक विकसित राष्ट्र की परिकल्पना लेकर हम इस कार्यक्रम को आज यहीं विराम देते हैं। अंत में मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि राष्ट्रगान के सम्मान में आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग हिमाचल यमुना गंगा उज्जवल जलधि तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता।